साइकोलॉजी की हिस्ट्री है वो ज्यादा पुरानी नहीं है। विलियम वुंट ने पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी ओपन की थी 1879 में लीप्जिग जर्मनी में। और तभी से साइकोलॉजी फॉर्मली जो हम साइकोलॉजी की बात करेंगे वहां से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सेपरेट डिसिप्लिन के फॉर्म में जो डिसिप्लिन लोगों ने देखना शुरू किया, क्योंकि विलियम वुंट ने पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी ओपन करी थी, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। वुंट्स आइडियाज फॉर्म द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी एंड स्ट्रक्चरलिज्म। तो वुंट के जो आइडियाज थे साइकोलॉजी को लेकर वही एक्चुअली बेसिस बनते हैं स्ट्रक्चरलिज्म का। स्ट्रक्चरलिज्म को फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, जिसे संरचनावाद कहते हैं। लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो वुंट के जो एक स्टूडेंट थे एडवर्ड टी डिक्शन, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को फॉर्मली एस्टैब्लिश किया। संरचनावाद को फॉर्मली उन्होंने बनाया एज अ सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म में हम पर्पस ऑफ स्टडी की बात करेंगे। पर्पस ऑफ स्टडी क्या है स्ट्रक्चरलिज्म? जो साइकोलॉजिस्ट इस स्कूल को फॉलो करते थे उनके अनुसार साइकोलॉजी किस बारे में होनी चाहिए। तो एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, द सपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो इस विचारधारा के जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका ये मानना था कि हमें यहाँ पर कॉन्शियसनेस यानी कि अपनी चेतना के कंपोनेंट्स को स्टडी करना है, और उसी को उन्होंने माइंड का स्ट्रक्चर माना था। दिस वाज द सपोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, और इसीलिए इसका नाम स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनर, consciousness and experience can be broken and analyzed into three basic elements। और consciousness या चेतना को तीन बेसिक एलिमेंट्स में डिक्शनर ने डिवाइड किया है। पहला है physical sensations, दूसरा है feelings, and third one is images such as memories and dreams। तो physical sensations जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या हम जैसा टेस्ट हम कर रहे हैं, जैसे स्मेल कर रहे हैं, जो फिजिकल सेंसेशन हमारे ये हमारी कॉन्शियसनेस का एक पार्ट बनता है। देन सेकंड इज फीलिंग, जैसा हम महसूस कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज इमेजेस, इमेजेस इन द फॉर्म ऑफ मेमोरीज एंड ड्रीम्स, हमारी यादें, हमारे सपने, इसमें हमारे आइडियाज भी आते हैं, क्योंकि आइडियाज भी हमारे जब दिमाग में आते हैं तो कुछ इमेजेस के फॉर्म में भी आते हैं, तो इसमें हमारे ये सब तो कॉन्शियसनेस को इन तीन एलिमेंट्स में इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। देन मेथड अगर हम देखें कि इसको हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चरलिज्म में इन्होंने मेथड यूज किया है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इसके लिए इन्होंने कहा कि हम जब खुद से बताएंगे कि किसी चीज को देखकर हम क्या फील कर रहे हैं, हमें क्या चीज हमारे दिमाग में आ रही है उसे देखने के बाद, तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। देन इस टेक्निक को एम्प्लॉय करने के लिए employing this technique, trained subjects were presented with various forms of stimuli and asked to describe as clearly and objectively as possible what they experienced। तो इसके लिए इन्होंने किस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इन्होंने ट्रेन सब्जेक्ट्स जो थे, सब्जेक्ट मतलब इन लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स करना किए गए थे। तो उन सब्जेक्ट्स को उनके सामने अलग अलग स्टिमुलस रखे जा रहे थे, अलग अलग स्टिमुलाई लाए थे, और उसके बाद उन्हें क्लियरली और ऑब्जेक्टिवली बताना है कि वो कैसा चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे अगर किसी सब्जेक्ट के सामने एक केक के पीस को लाया जाए, तो वो उस केक के पीस को देखकर क्या क्या उसके मन में आ रहा है उसको क्लियरली बताए, और जैसे उसके टेस्ट के बारे में, फ्लेवर के बारे में, या कैसा टाइप ऑफ फूड है, तो उससे जुड़ी हुई कोई और याद हो सकता है उसके दिमाग में आ जाए, सब्जेक्ट के दिमाग में। तो ये है इंट्रोस्पेक्शन का मेथड। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो इंट्रोस्पेक्शन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ रिलायबल ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड थिंग। इस स्कूल ऑफ थॉट का जो क्रिटिसिज्म आता है वो यही आता है कि इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है वो उतना रिलायबल नहीं है, ना ही वो ऑब्जेक्टिव मेथड है, और ना ही एक वैलिड टेक्निक। रिलायबिलिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम दोबारा से इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को सब्जेक्ट के ऊपर अगर परफॉर्म करें तो जरूरी नहीं है कि उनका आंसर फिर से वही आएगा, क्योंकि चेंज होता रहता है। एक ही सब्जेक्ट का जो फीलिंग है, परसेप्शंस है चीज के लिए, तो वो उतना जरूरी नहीं है कंसिस्टेंट हो। तो इसलिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड इतना रिलायबल नहीं कहा जाएगा कि वैलिड टेक्निक नहीं कही जाएगी। फिर ऑब्जेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी तो इसमें हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि एक ही चीज को देखकर हर एक पर्सन का अपना अपना परसेप्शन होगा और वो अलग अलग चीजें बताएगा। तो यहाँ सब्जेक्टिविटी आएगी, क्योंकि हर पर्सन किसी चीज के बारे में अलग तरीके की सोच रखता है। सेकेंड हम देखेंगे इट इज अनेबल टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर सच एज सिचुएशन, सेक्सुअल डिफरेंसेस एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस की कंपोनेंट्स की बात की गई, कैसा फील किया जा रहा है,
कैसे सेंस हो रहे हैं, कैसी इमेजेस आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे और चीज़ों को तो देखा ही नहीं गया, इसमें सारे एस्पेक्ट्स जो है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। जैसे मोटिवेशन की बात करें, प्रेरणा की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें या नॉर्मल बिहेवियर की बात करें, तो कुछ भी यहाँ पर हमारे सामने निकल कर नहीं आ। आगे बढ़ते हैं फंक्शनलिज्म पर। फंक्शनलिज्म ये अनदर स्कूल ऑफ थॉट आया स्ट्रक्चरलिज्म के बाद, और इसके प्रोपोनेंट विलियम जेम्स कहलाते हैं। और ये चार्ल्स डार्विन को बहुत ज्यादा चार्ल्स डार्विन के बारे में आपने साइंस में पढ़ रखा होगा। इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, इवोल्यूशन की बात की थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की थी कि ऑर्गेनिज्म को हमेशा अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, तभी वो उस एनवायरनमेंट के साथ और चेंजिंग नेचुरल कंडीशंस के साथ सर्वाइव कर पाए। तो यहाँ पर अडेप्टेशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वगैरह की बात हुई, इवोल्यूशन की बात हुई, इसी से इन्फ्लुएंस थे विलियम जेम्स। तो अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, स्ट्रक्चरलिस्ट वर सोली मिसगाइडेड। तो विलियम जेम्स के अनुसार स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो मिसगाइडेड थे, मतलब वो गलत दिशा में जा रहे थे। द माइंड इज फ्लूइड नॉट स्टेबल। उनका कहना था कि माइंड जो है वो स्टेबल नहीं, जबकि संरचनावादी जो थे वो माइंड को स्टेबल मानते थे, तभी तो वो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिवाइड करके उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विलियम जेम्स के अनुसार माइंड क्या है, फ्लूइड है। कॉन्शियसनेस इज ऑनगोइंग एंड नॉट स्टेटिक। चेतना जो है वो हर समय चलती रहती है, जरूरी नहीं है कि वो स्टैटिक रहे, वो स्थायी नहीं है। Knowing the composition or structure of mind is not as important as understanding its activities or functions. अब क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं है तो उसके माइंड के स्ट्रक्चर को जानना बेकार है। इससे अच्छा है कि हम किस तरीके से माइंड फंक्शन कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज किस तरीके से हो रही है उसको समझिए। He further elaborated that habits but functions of our nervous system. When we repeat something several times, our nervous system are changed so that each time we open a door, it is easier to open than it was last time. तो विलियम जेम्स हैबिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा है कि हैबिट्स कुछ भी नहीं है, बस हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन है। तो हम इसको बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। अगर हमें एक ही चीज को, एक ही काम को बार बार करेंगे तो उस काम को हम और तरीके से कर सकते हैं, हमें उस काम को करने की आदत हो जाती है। तो हैबिट्स हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शंस। इसके अलावा देन अदर फंक्शंस की बात करें जो स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए थे, तो वो है जॉन टीवी, जेम्स रोलैंड, एंजल, जी स्टैनली हॉल एंड जेएम कैटल। स्टैनली हॉल का नाम एडोलेसेंस पढ़ते वक्त ही आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने बीच के टाइम पे। स्टैनली हॉल का एक स्टेटमेंट है, एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। जो किशोरावस्था है, जो तूफान और तनाव की स्टडी क्या बताया गया है, टू स्टडी फंक्शनिंग ऑफ माइंड। फंक्शन इन दिस सेंस कैन बी वन ऑफ द टू। तो यहाँ संरचनावादियों से अलग फंक्शनलिस्ट थे, वो ये बिलीव करते थे कि हमें माइंड के फंक्शनिंग को स्टडी करना है, ना कि उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। तो फंक्शन से यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ के दो मतलब थे कि पहला तो हम ले सकते हैं कि हाउ द माइंड ऑपरेट्स, मतलब माइंड के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं किस तरीके से एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं और कैसे वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। देन सेकंड इज हाउ मेंटल प्रोसेसेस प्रमोट अडैप्टेशन, और कैसे हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस, जो मेंटल फंक्शनिंग हमारी हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग सिचुएशन के साथ अडैप्ट करते हैं। देन मेथड की अगर हम बात करें, मेथड जो इसमें यूज किए गए थे इंट्रोस्पेक्शन टेक्निक तो की थी, साथ ही साथ इसमें कुछ नए मेथड इन्होंने जोड़े थे, उन्हें मेंटल टेस्ट, क्वेश्चनियर्स एंड फिजियोलॉजी। तो ये कुछ और डिफरेंट तरीके जो थे वो इन लोगों ने यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन की टेक्निक के साथ ऐड किए। अगर हम बात करें स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट में, तो दोनों ने ही एक सिमिलरिटी है कि दोनों ने कॉन्शियस माइंड, चेतन मन की बात करी है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट पे चलते हैं, जो है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस जिसे आप हिंदी में मनोविश्लेषणवाद भी कहते हैं, और इसकी प्रोपोनेंट है सिगमंड फ्रॉइड। बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका साइकोलॉजी में। सिगमंड फ्रॉइड की अगर हम बात करें तो इन्होंने नॉर्मल्स को स्टडी किया था, और इसके बाद उन्होंने अनकॉन्शियस की बात की। अनकॉन्शियस या तीन टाइप के हमारा माइंड बोले जाते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस तो चेतन हो गया, सबकॉन्शियस अवचेतन, और अनकॉन्शियस एकदम बेसो दिमाग में, जहाँ पर हमारी मेमोरी, यादें और सपने इस तरह की चीजें आती हैं, जहाँ पर हमें हम अनजाने में अगर चीजें जो करती हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड से जो एक्सेस हो रहे हैं हमारे, उसका मतलब वो हमको समझ नहीं कर रहे अनजाने में। सिगमंड फ्रॉइड
ने एक बुक पब्लिश करी थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड ही बिलीव दैट मच ऑफ आवर बिहेवियर इज गवर्न बाय हिडन मोटिव्स एंड अनकॉन्शियस डिजायर्स। तो सिगमंड फ्रॉइड का ये मानना था कि जो हमारा व्यवहार है वो हमारे हिडन मोटिव और अनकॉन्शियस। जी, बात हो रही थी सिगमंड फ्राइड की। Sigmund Freud, the father of psychoanalytic school of thought, and what he focuses on unconscious determinants of behavior and the importance of sexuality in human life. According to Freud, the unconscious consists of thoughts that one is not aware of, but that is still influence one's behavior. So, psychic determinism की जो theory है, according to Freud, it gives us a basis for studying personality. Moving forward, id, ego, and superego thought of Freudian teaching that id is a compulsory component of personality which relies on the principle of I want, and I wanted it now, which is player principle. Player, in every sense of seeking what he or she wants to fulfill, whereas the ego is a reality principle. What the ego do? Ego relies on available realities and live in the present world. The third thing is superego. Superego is based on morality. In order for a person to function consecutively in society, he or she must acquire a system of values, norms, ethics, which are reasonably compatible with that society. These are acquired through the process of socialization, and in terms of the structural model of psychoanalysis, are developed through the formation of superego. The superego is the last major system of personality to be developed and represents an internalized version of society, norms, and the standards of behavior. In Freud's view, the human organism is not born with a superego. Rather, children must incorporate it through interactions with parents, teachers, and other formative figures.
As a moral ethical arm of personality, the superego results from the child's prolonged dependence upon the parents. It makes its formal appearance even in the child is said to know right from the wrong, good from the bad, moral from immoral. By the ending of this about school of thought of psychoanalysis, we have example how id ego and superego react or behave. For example, you go to garden where you see red roses, you face intra-sacking conflict. It what it said, I want red rose and I want it now. Ego, I can afford to buy red roses from flower shop. Superego, stealing is bad. The sign says don't pluck flowers. See the difference between id ego and superego. Id, which is player principle, it wants. Ego says no. What is the reality is I can buy it. Whereas superego is a moral principle and talking about if you pluck it, it will be bad thing. So don't pluck. Similarly, these three patterns occurs in a human life as a phenomenological energy. Another example we have, you go to a store, you see a lovely jacket, but the price is high, but no one is looking, you face intersecting conflict. What will it? I want the jacket, I want it now. The ego will say, I have to be realistic, I cannot afford the jacket. मुझे छोड़ देना चाहिए इस चीज को. And super ego will punish the id. How? Super ego will say, stealing is bad thing. So back to the other schools. Now we have a behaviorism. Behaviorism, founded by J.B. Watson, and he asserted that psychology should study only observable behavior. And psychology became the scientific study of behavior instead of consciousness, which was unseenable, untouchable things like behavior we can perceive. As you know, the behaviorists stressed the importance of environment over heredity and pioneered animal research. Thank you, Esabilla. You're online. You may ask any question if you have, even without any topic. Not only we are today was talking about the schools of thought, but you may ask any question. It's not compulsory. You may ask anything.
Are you listening me? Uh, Scope of psychology is very vast in Pakistan specifically. If you talk about the for the male and male psychologist and male opportunities, psychologist opportunities, the bright future is in air forces and Pakistan Navy and the very well in Pakistan Army. That is the job which we Pakistani youth can dream about that. और आप उसमें अगर आप BS और MSc आपने की हुई है तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आप वहाँ रिक्रूट हो सकते हैं, कैप्टन साइकोलॉजिस्ट, फ्लाइट ऑफिसर साइकोलॉजिस्ट और नेवल में भी कैप्टन साइकोलॉजिस्ट के तौर पे आप एंट्री ले सकते हैं. और दैट इज़ बेस्ट फॉर एवरी पाकिस्तानी male who is in capacity to have a degree very well. And other than forces, we have a home department, Punjab government of Punjab, and federal, where you can induct yourself as a deputy superintendent police, ESP, and as a jail psychologist, prisons department में psychologist. और उसके बाद another merging department is forensic psychologist. If you hold a master degree, you can be a forensic psychologist, and that is the working is accurately 100% as a psychologist when you are working in forensic science department. This is also part of government of Punjab. और उसके अलावा besides the teaching, you have opportunities in rescue department, फायर एंड फाइटिंग एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट 1122 नेमली आप जिसको कहते हैं. और इसके अलावा एनजीओ सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस सॉर्ट ऑफ एनजीओ की वर्किंग कर रहे हैं. लेकिन बहसीत साइकोलॉजिस्ट यू कैन ज्वाइन such NGOs who are working on social awareness programs, लाइक यूनिसेफ, लाइक यूनेस्को, लाइक यूएनओ के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें बेताशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइकोलॉजिस्ट के लिए. और स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल साइकोलॉजिस्ट. मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस वो थोड़ी सी मोटिवेशन होनी चाहिए, पर्सनैलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि वो सोशली काम कर सकें. और पुलिस डिपार्टमेंट में और प्लस वो बच्चे बच्चियाँ जो BS और MSc कर लेते हैं साइकोलॉजी में, दे कैन बी अ गुड CSP ऑफिसर. Smart effort required to be a graduate and do the some basic preparation in essay writing and English writing. Then after them they can join as an PSP or CSP officers in Punjab government and federal government as well. And another is a NAB, the National Accountability Bureau. They also have opportunities work for the psychologists, and the FIA, Federal Investigation Agency, and PIA, जो मेजर उसकी डोमेन है, CAA, सिविल एविएशन ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके अंदर भी साइकोलॉजिस्ट की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं. और दे आर यूज टू कॉल, या उसको ऐड देते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से. Do you have another question?
Hello. Hello. We're talking about the behaviorism school of thought. As we talk about that, behaviorism founded by the John B. Watson and accepted by psychology should study only observable behavior. This view gradually took hold the psychology that becomes scientific study of behavior instead of consciousness, which is not visible thing. Behaviorists stress the importance of environment over heredity and pioneered animal research. Next thing that was how behaviorism school of thoughts flourish, and the behaviorism flourish with the work of Skinner, basically J.B. Watson's. And boosted behaviorism boosted by the B.F. Skinner's research. A strict focus on observable behavior and the importance of environment. He generated controversy by arguing that free will's an illusion. That is the point when we came to know that psychology is an empirical thing and it based on an objective observation made through the research. Another thing about that, behavior is determined by the multiple causes. Complex causation is a rule and single cause explanation are usually incomplete. Behavior is shaped by the cultural heritage. Cultural factors exert considerable influence over some aspects of behavior. And talking about the last thing,
Heredity environment jointly influence behavior. Nature and nurture interactively shape most behavioral traits. People's experience on world is highly subjective. People tend to see what they expect to see and what they want to see. Another school of thought that humanist revolution, humanism school of thought, finding both behaviorism and psychoanalysis unappealing. Advocates of humanism such as Carl Rogers, Abraham Maslow, they began to gain some influence in 1950s era. And the focus आसान लफ्ज़ों में आपको ये बताऊं that at that time period psychology was only considered for the those who are feeling any sort of insanity, any sort of abnormality in their personalities.